Hello friends and welcome back to the another video. Sony sent me the newly launched earphones, wireless earphones WF-XB700 for a review and a test. As my close friends know that how much I love music, you will never find me without a headphone or earphones whenever I'm shooting outside. Even when I'm shooting in Spiti night photographs, तब भी मेरे कानों में earphones लगे रहते हैं, headphones लगे रहते हैं, मैं जोर से गाने गा रहा हूँ. I just love music. So I'm so much excited to try this Sony के नए WF-XB700 earphones or earbuds. So before I go to the features of WF-XB700, let's unbox it. Now let's talk about the features. As we all know, Sony is famous for the sound quality, the audio quality, the music quality they give. And जब वो अपने डब्बे पे इतना बड़ा extra bass लिखेंगे, so obviously they are sure what they are talking about. As it mentioned on name, it comes with 12mm extra bass driver. Plus Sony already mentioned they made these earphones for all the music and bass lovers, especially who love to listen the EDM music. Now let's talk about the battery life. Usually all TWS earphones work maximum for 6 hours in continuously music play, but Sony WF-XB700 can work for 9 hours in one-time charge. And also one more thing which I like about this earphones, the box has inbuilt 9 hours charging. So that means with full box and earbud charging, it can work for 18 hours. And also it comes with a quick charge, and Sony said with just a 10 minutes of charging, you can use these earphones for 60 minutes of music play. The design is very unique, and Sony said it's designed to make contact with 3 different points on your ear for a secure and comfortable fit. Well, these earphones are not waterproof, but it has IPX4, so it is a splash and sweat proof. तो आप आराम से हल्की बारिश में इसको पहन के यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जिम में वर्कआउट करते वक्त भी इनको यूज़ कर सकते हैं. It also supports Google और Siri voice assistant. Now अब earbuds के बटन की बात करें तो they are really different from other earbuds I have used, but they don't support the touch gesture. क्योंकि ये earphones touch support नहीं करते हैं, so you have to manually press the buttons which are available in both the earphones. So if you press the left earbud button, so the sound will increase, and अगर आप उस बटन को दबा के रखेंगे तो आपका साउंड कम हो जाएगा. और अगर राइट साइड के ईयरबड की बात करी जाए तो एक बार प्रेस करने पे आपका म्यूजिक प्ले या पॉज हो जाएगा, 2 बार प्रेस करने में आपका नेक्स्ट सॉन्ग प्ले हो जाएगा, 3 बार प्रेस करने में आपका प्रीवियस सॉन्ग चलना शुरू हो जाएगा, और 4 बार प्रेस करने में आपका गूगल असिस्टेंट या फिर आपका सीरी असिस्टेंट खुल जाएगा. कॉल आने या काटने के वक्त आप दोनों में से कोई भी बटन को एक बार प्रेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस. सो दे आर एलिगेंट एंड इवन बॉक्स आल्सो गिव्स यू अ रॉक फील. क्योंकि WF-XB700 की बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए ईयरबड्स की साइजेस भी बाकी नॉर्मली जितने भी आपके ईयरफोन्स आते हैं या ईयरबड्स आते हैं उनसे ज़्यादा इनका बड़ा साइज़ है. और अगर वेट की बात करूँ तो एक ईयरबड का वेट 8 ग्राम है. The earbuds and box have magnet, तो easily they will fit on the box. The box is translucent, तो जब भी आप अपने earbuds को बॉक्स के अंदर रखेंगे और वो चार्ज हो रहे होंगे तो आप उसके अंदर उसकी लाइट देख सकते हैं, so that you know the earbuds are charging. Also they don't have a active or passive noise cancellation, पर इस प्राइस में उतना तो चलता है यार. और अगर आपने उसको अच्छे से पहन रखा है, वो आपके कानों में अच्छे से फिट हो गए हैं, तो वो आपके कानों के अंदर एक ऐसा वैक्यूम प्रेशर बनाते हैं जिसकी वजह से 60 से 70% आउटसाइड नॉइज जो होती है वो वैसे कैंसिल हो जाती है. अब लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू कनेक्ट देम. तो इनको आईफोन या एंड्रॉइड से पेयर करने का बहुत ही ईजी तरीका है, बिकॉज दे आर यूजिंग द ब्लूटूथ 5 वर्जन, तो इट्स वेरी ईजी टू कनेक्ट देम. आपको सिर्फ अपने बॉक्स के अंदर से ईयरबड्स निकालने हैं एंड अपने फ़ोन के ब्लूटूथ फीचर पे जाना है, वहाँ से पेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, वहाँ से स्कैन करना है और आपको वहाँ पे WF-XB700 नाम मेंशन दिख जाएगा. यू कैन क्लिक ऑन इट एंड इट विल कनेक्ट विद योर फोन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस एंड आप कहाँ से इसको खरीद सकते हैं. तो अगर हम MRP की बात करें तो MRP है इसका 11,990, बट आपको ये Amazon एंड फ्लिपकार्ट पे 9,990 का मिल जाएगा. सो इफ़ यू लव टू लिसन द गुड म्यूजिक एंड यू लुकिंग फॉर न्यू ईयरबड्स, सो यू कैन गो फॉर द Sony WF-XB700. As I said in the starting, Sony is famous for the audio and the music, and these earbuds specially made for the people who love to listen the extra music with the extra bass, and you won't be disappointed. So thank you so much guys for watching this video. I hope आपको मेरी first ever earphone headphone का review आपको पसंद आया हो. Do subscribe my YouTube channel for more upcoming video tutorials
photography tutorials and reviews. I'll see you in the next video. Till then, goodbye, be at home and stay safe.